But I can tell you, not even for a day or an hour or a minute, I have regretted leaving my job. So definitely, insurance is one industry wherein I say you can write your own paycheck. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक पॉपुलर टर्म है गोल्डन हैंडकफ्स। अच्छी सैलरी, स्ट्रॉन्ग डेजिग्नेशन, स्ट्रक्चर्ड रूटीन। ऑन पेपर सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल्स एक चीज़ फील करते हैं, अपनी अर्निंग और ग्रोथ पर कंट्रोल ना होना। अपने कंफर्टेबल 9 to 5 को छोड़कर सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बना सकते हैं, आज हम सीखेंगे विद गीता शर्मा, जिन्होंने पीबी पार्टनर्स के साथ जुड़कर फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ हासिल की। गीता जी, वेलकम टू पीबी पार्टनर्स इंश्योरकास्ट। Thank you so much, Harshita. माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, एक स्टेबल कॉर्पोरेट करियर से एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांजिशन करना एक बड़ा रिस्क होता है। वो कौन सा स्पेसिफिक मोमेंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि कॉर्पोरेट लैडर अब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वायबल नहीं है? मैंने ये जर्नी स्टार्ट की इंश्योरेंस की वे बैक इन 1988 और उससे पहले मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग में था। सो राइट आफ्टर कॉलेज आई गॉट अ जॉब, तो सोचना भी नहीं पड़ा क्या करना है, एंड समहाउ जर्नी टू इंश्योरेंस सेक्टर वाज आल्सो लाइक दैट। सो आई डिडंट हैव टू थिंक कि भैया मेरे को क्या करना है क्या नहीं, एंड नौकरी मिल गई। 20 साल से ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में काम करने के बाद और एक सर्टेन लेवल पे हैंडलिंग ऑफिसर्स ऑल्सो डिपार्टमेंट्स के अलावा, बीइंग इन चार्ज ऑफ ब्रांच एंड देन डिवीजन, आई रियलाइज्ड कि कुछ अपने लिए करना चाहिए। और जितना मेहनत उसमें वो कर रहे हैं उससे अच्छा है कि आप अपने लिए खुद मेहनत करें। लाइक मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर ये इतनी मेहनत मैं अपने लिए करूं तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। टाइम भी, आई विल हैव टाइम फ्रीडम ऑल्सो एंड फाइनेंशियल फ्रीडम ऑल्सो, बोथ। आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी ऑल्सो। करेक्ट। सो एग्जैक्टली, यू नो, द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि बच्चे बड़े हो गए और आपका सैलरी का जो इनपुट है इज़ नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल कि आपके घर के लिए सपोर्ट के लिए चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई सेड इनफ, नाउ वी हैव दैट लिबर्टी टू चूज टू डू व्हाट आई वांट टू डू रादर देन जो चल रहा था। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए मंथली सैलरी एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन होता है। हम इसे जनरली गोल्डन हैंडकफ्स भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। आपने उस साइकोलॉजिकल बैरियर को कैसे ओवरकम किया? हाउ डिड यू कैलकुलेट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो? इट वाजंट टफ फॉर मी, बट आई कैन अंडरस्टैंड जो आप चीज़ बोल रहे हो। हाँ, ये चीज़ होती है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में हर महीने आता है, लेकिन अगर हम उसको ये सोचें कि उस फिक्स्ड अमाउंट के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। सो कहने को 9 to 5 जॉब है, बट इट वाजंट 9 to 5 फॉर मी। आई वाज वर्किंग लाइक ऑलमोस्ट 24/7 वेकिंग आवर्स जितने भी उसमें मिलते हैं, एंड आई वर्कड हार्ड। सो अगर मेरा मानना ये है, अगर कोई मेहनत करने वाला बंदा है या बंदी है, उसको अपने लिए इतना रिस्क लेना तो बनता है, क्योंकि यू गॉट ओनली वन लाइफ। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट व्हाई इंश्योरेंस, स्पेशली बीइंग अ वुमन? देयर आर सो मेनी टैबूज। व्हाट मेड यू रन टुवर्ड्स इट? So I would say for me it was different because I had the experience and expertise of insurance. 20 साल एक इंश्योरेंस में नौकरी करने के बाद it came naturally to me. Right. And that's when I realized, you know, for me to give advice to somebody is natural. I don't have to think much. People are confused, clients are confused. They don't know much about insurance. कैसे काम करता है, कहाँ you get stuck up, and where you need to hold and where you need to kind of, go forward. So for women, I think this is also a very big advantage. People don't realize insurance industry में अगर आप entrepreneurship में especially काम करते हो, wherein you have such beautiful platforms like PB Partners, if you align with them, you get the support. आपको उतना you don't have to take the entire burden अपने ऊपर, और उसमें फिर आप अपनी choice के हिसाब से, अपनी circumstances के हिसाब से you give the input, and accordingly you get the income. Yeah, so definitely I think for women insurance is a good industry, but people need to understand and they need to find the right mentorship or right support. Why did you choose PB Partners specifically over other businesses? So PB Partners, I would say, gives you one platform where you can have a wider horizon. Right. क्योंकि otherwise आप
एक किसी इंश्योरेंस कंपनी से 2 में 3 में काम कर सकते हो। इधर आपके पास वो फ्रीडम है कि जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्यूशन दे पाओ। सो आई थिंक दैट्स वन मेजर रीज़न, क्योंकि वेयर एल्स विल यू गेट दैट? सी मेनली वन इज वाइडर होराइजन, सेकेंडली ऑल्सो सपोर्ट ऑफ द टीम। करेक्ट। वो सारे काम आपको, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, यू हैव द RM, you have RM's bosses and the entire team to support you. Correct. And to kind of guide you also somewhere. They know better, they are aligned with the insurance companies and all. तो क्या solution better रहेगा, कहाँ पे हमें better aligned रहेंगे, और whatever our proposal needs, कहाँ पे वो suit करेगा. So that I think is the strength of PB Partners. Right. Secondly, I think it's also about you don't have to bother about payments. Because ultimately आप काम कर रहे हो तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो आएगी वो भी ऑटोमेटिक ही है ऑलमोस्ट। तो क्रेडिट आ जाता है, वो भी at the end of the day that also matters. So that's a big support of PB Partners. So again, payments जहाँ तक important है, it's also important that your renewal is also protected. तो आपका renewal ये नहीं है कि it will be lost. Correct. Next year you have the basis for that, and आपका renewal income commission is also protected. Right. So definitely एक बारी जो काम किया आपने, एक बॉन्ड बनाए, एक ट्रस्ट जनरेट किया, उसका आपको कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता है. you know that Right. is year on year. Right. That amount comes to you. Yeah. Can you just briefly explain to our viewers how the renewal model works and why it is better than one-time salary? A great question, because इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. Correct. आपने एक बार ही मेहनत की, एक क्लाइंट लेके आए, आप उसको कुछ सपोर्ट दिया, उसको इंश्योरेंस करा उसका. नाउ दैट इंश्योरेंस इज नॉट फॉर वंस ओनली. अब ज़्यादातर इंश्योरेंस जो है हर साल रिन्यू होंगी. तो अगर आपने एक कस्टमर बेस बिल्ड कर लिया, इनिशियली आपने 10 से शुरू किया, वो 10 बढ़ते बढ़ते 100 हुए, जो भी आपने बिल्ड किया वो आपके लिए फॉर एवर है. सो इट्स जस्ट लाइक वंस यू हैव बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड कनेक्ट, दैट क्लाइंट स्टेज विद यू फॉर एवर. सो जस्ट मेंटेन द ट्रस्ट एंड यू बिल्ड ऑन द रेन्यूअल इनकम. और वो एक रेगुलर इनकम आपके लिए आती रहती है लाइफ टाइम पे. इट वर्क्स लाइक पेंशन एंड विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. तो आपने एक जो मेहनत की वो आपकी वेस्ट नहीं होती है, बल्कि आप उस पर बिल्ड करते हो. सो नाउ यू कैन जस्ट रिपीट दैट एंड बिल्ड ऑन दैट, एंड यू हैव अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देयर वाला कॉन्सेप्ट ही चलता है. Right. मतलब मेहनत एक बार और कमाई साल भर साल. सालों साल सालों साल. कमाई सालों साल. कमाई That is, सालों साल. you just Right. have to keep that trust, and whenever the customer client requires, you have to be there for them. Right. So it's about retention is very important, Correct. which will build you a regular income. Correct. Okay. So what major challenges you were facing when you started your insurance journey as a woman? So rightly said, as I said, male dominated दुनिया है, industry भी है. Correct. So I would say initially, if I go 20 years, 30 years back now, more than 30 years, when I started this journey, as a young girl, I would say, people definitely, first thing was ki, this is an intrusion into the male-dominated industry. And I vividly remember somebody saying that women have started working and have started coming to industry, and that's where the boys are not getting the प्लेटफॉर्म. अब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आप एक इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, उधर भी लेकिन यही प्रेजुडिस बोल लो या ये सोच बोल लो कि भाई क्योंकि लड़कियां अब आने लगी हैं नौकरी में तो लड़कों को जॉब नहीं मिल रही है. एंड सेकेंडली, येस, एज यू सेड, ट्रैवलिंग में भी वॉज अ प्रॉब्लम इनिशियली. आप कहीं जा रहे हो, टाइमिंग्स प्रॉब्लम हो सकती हैं. सो यू हैव टू एडजस्ट दोज थिंग्स, which is I feel very natural in any industry, any job, or wherever. Even if you're not working, that's also a problem. That's women have to handle Right. that. So yeah, that is one thing, one challenge. And then, but I would say the thing that goes beyond this challenge is your knowledge. अगर आपको concepts clear हो, ultimately people understand.
तो चैलेंज में अगर कहें तो येस, पीपल डोंट टेक यू सीरियसली इनिशियली. Maybe people, you have problem in traveling, communicating to people and letting people also understand, that what you are saying is, good enough or... Right. So that is the point. But as I said, आप अगर अपना concept clear रखो, knowledge रखो, people come to you. That would, I think, and then you stand out in that industry because आप बहुत कम हो. ज़रूरत नहीं है ना आपको इतना ज़्यादा उस prominence के लिए. अपने आप ही you get Right. No, of course. then get noticed and get the support. If I may ask, how does your income today compare to your old salary? Are you working more hours or fewer hours to earn that? A very good question, Harshita. Had this not been advantageous, I would be regretting leaving my job. But I can tell you, not even for a day or an hour or a minute, I have regretted leaving my job. Wow. Because the amount of work I was doing there, compared to that, I have much of time freedom now. And time freedom ऐसे नहीं है कि आपके regular hours हैं कि वहाँ पे आप 10 से 6, 9 से 5 काम कर रहे थे. यहाँ पे आप दिन भी तय कर सकते हो. This particular day you don't want to work or you don't have, you can align your work accordingly, schedule it in a way that you have more time on hand. And income की भी बात अगर मैं करूँ, अगर आप seriously focused काम करते हो, तो definitely insurance is one industry wherein I say you can write your own paycheck. तो आप अपना डिसाइड करो आपको कितना कमाना है. कम कमाना है, ज़्यादा कम टाइम काम करोगे ज़्यादा टाइम फ्रीडम मिल जाएगी. ज़्यादा टाइम काम कर लोगे तो ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी. It all depends on you and your choices. So for someone watching this from their 9 to 5 desk, scared to take that leap, what will be your advice? Each person has to make their choice. Correct. If they're happy working at their job desk, because उसके एक अलग routine वो है, you don't have to strive much, regular income आएगी ही आएगी. एक आपको set norm में काम करना है, उतना काम किया तो आपकी income आ जाएगी. If you have that mindset, definitely you continue being there. But if you are a little enterprising and if you think you can do better and if you intend to work hard, then I think it is always good to step out and take that one chance at least to set your own boundaries and be free and experience that freedom. And of course there are different challenges. Each challenges are different, job का अलग होता है, अपने काम का अलग होता है. But yes, But we get only one life. You get only one life and one must experience, of course. And I think these days more and more people are stepping out and trying to work on their own. सब Correct. fields में हो रहा है तो insurance में क्यों नहीं? Absolutely. Only Rightly thing said. is you need to continue with that. Consistency भी तो एक बड़ा important factor है. एक बार ही लगता है ना इतने पैसे आ गए तो ठीक है अब enjoy या ये कर लो. Consistency is important and that's where you build the corpus. Thank you so much, Geeta ji, for coming to our podcast and giving your valuable advice to all our partners. Thank you so much, Harshita. And partners, please subscribe to our channel PB Partners Pathshala for more such insightful videos.